Assalamu alaikum students, I am your geo teacher. So open your geo book and open page number 1, topic Pakistan. Hope you learned the previous lecture and previous video. First of all, I cleared you students that when school is reopened, I will conduct a test on these lectures. So dear students, today our topic is our country, Pakistan. You will have pencil for it that you may write the meaning of difficult words. So, in which continent Pakistan is located? Asia. Our country, Pakistan, is located in Asia. So, let's start from the facts of Pakistan. Look at the arrow. Capital, Darul Hukumat, Islamabad. Islamabad is the capital of Pakistan. Currency, rupee. Currency mean सिक्का होता है, रुपया होता है, तो वो है रूपी. रिलीजन, मज़हब, इस्लाम. लैंग्वेज, ज़ुबान, उर्दू. लैंग्वेज, उर्दू. Look at the first line. Pakistan is located in the Southwest Asia. कहाँ पे वाक़या है पाकिस्तान? साउथ वेस्ट, जुनूब मगरिब. साउथ, जुनूब, वेस्ट, मगरिब. इन एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया की जुनूब मगरिब में जो है पाकिस्तान वाक़या है. इट शेयर्स कॉमन बॉर्डर विद इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड ईरान. इसकी जो कॉमन बॉर्डर है तो वो कौन सी कंट्रीज़ के साथ है? इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड ईरान. मीन कि इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान जो है पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ है, पड़ोसी ममालिक है. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की बानी है. The population is around 160 million, which is 7th highest in the world. इसकी जो population है, population mean आबादी, around 160 million, तो वो 160 million से मिलती है. 160 million है, which is 7th highest in the world, जो कि दुनिया की जो है 7वें नंबर पे है. Area wise, Pakistan is 34th largest country in the world. By area, पाकिस्तान 34th नंबर पे एक बड़ा मुल्क है. उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज. उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है. नेशनल, कौमी, लैंग्वेज, ज़ुबान. However, regional languages are spoken in different provinces. लेकिन फिर भी मुख्तलिफ सूबों में जो है इलाक़ाई ज़ुबानें बोली जाती हैं. मीन के हर एक सूबे में अपनी अपनी ज़ुबानें बोली जाती हैं. पाकिस्तान is divided into 4 provinces, namely Sindh, बलूचिस्तान, पंजाब and खैबर पख्तूनख्वा. पाकिस्तान 4 सूबों पर तकसीम हुआ है, जिसके नेम्स है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा. Besides these 4 provinces, Azad Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan, formerly known as Northern Areas, are 2 political units under the Pakistani control. Besides these 4 provinces, इन चारों सूबों के अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, formerly माजी में पहले नाउन एज नॉर्थर्न एरियाज, इसको शुमाली हिस्सा कहा जाता था, और 2 पॉलिटिकल यूनिट्स. तो ये एक ऐसी सियासी 2 यूनिट्स थे अंडर द पाकिस्तानी कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में ये भी है. मीन के ये 4 प्रोविंसेस जो है, लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान एंड सिंध, ये 4 प्रोविंसेस तो है. लेकिन इसके अलावा ये आज़ाद जम्मू कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट से, तो ये भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है.
Look at the third para. Important crops are grown are wheat, rice and cotton. अहम फसलें जो वहाँ पर उगाई जाती हैं तो वो wheat, गंदम है, राइस, चावल है and cotton कपास, रुई है. Cotton being the main export. Cotton जो है वो इनकी एक main export भी है. Export mean बरामद करना, दूसरी countries को भिजवाना, उनको बरामद करना. The largest city is Karachi where over 12 million people live and work. Largest सबसे बड़ी शहर जो है वो कराची है जहाँ पर 12 मिलियन लोग रहते हैं और काम करते हैं. इट इज़ आल्सो ए सी पोर्ट. वहाँ पर एक बंदरगाह भी है. पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड पाकिस्तानीज. पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानीज कहा जाता है. दे आर ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग. वो बहादुर है, ब्रेव बहादुर, स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती होते हैं. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है. एग्रीकल्चरल मीन ज़री. Therefore, most of the people are associated with agriculture. इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़राअत से ही जुड़े हुए हैं. Associated mean जोड़ना. The national dress for men is शलवार कमीज, शेरवानी and जनाकेब. नेशनल ड्रेस कौमी लिबास जो है वो आदमियों के लिए शलवार कमीज है, शेरवानी है और जना कैप है. एंड फॉर वुमेन इट इज़ शलवार कमीज विद दुपट्टा. और औरतों के लिए दुपट्टे के साथ शलवार कमीज है. नाउ टर्न द पेज. पेज 2. Look at the first line. River Indus is the largest river that flows through the center of the country. River Indus जो है वो एक बड़ी दरिया है that flows through the center of the country, जो कि इस मुल्क के पाकिस्तान के सेंटर में मरकज़ में बहती हैं. Flows mean बहना, center मरकज़. Pakistan has one of the best canal systems in the world. पाकिस्तान के यहाँ जो है एक अहम जो है एक अच्छा कैनाल सिस्टम. कैनाल मीन नहर, पानी का जो रास्ता होता है दुनिया में तो कहते कि वो पाकिस्तान में है. द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, K2 also lies in पाकिस्तान. दुनिया की जो दूसरी हाईएस्ट सबसे ऊंची पहाड़ जो है माउंटेन पहाड़ K2 also lies in पाकिस्तान, तो वो भी पाकिस्तान में है. फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद. फैसल मस्जिद इन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में जो इसकी कैपिटल है पाकिस्तान की, द कैपिटल सिटी is said to be the biggest mosque in the world. कहते कि ये दुनिया का जो है एक सबसे बड़ा मस्जिद है. Now look इंटरनेशनल एयरलाइन. कौमी जो एयरलाइन है PIA. नेशनल फ्लावर जैस्मीन. नेशनल जूस शुगर केन जो गन्ने की जूस होते हैं. नेशनल गेम हॉकी. नेशनल एनिमल मारखोर एंड नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल. Now look here the capital of Pakistan, Islamabad. इस्लामाबाद. दिस इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की दारुल हुकूमत है. कैपिटल मीन दारुल हुकूमत. In 1959, General Ayub Khan, the then President of Pakistan, decided to shift the capital from Karachi to Islamabad. 1959 में जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, सदर थे, डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद. तो उसने फैसला किया, डिसाइड किया. डिसाइडेड मीन फैसला करना. टू शिफ्ट मीन मुंतकिल करना. द कैपिटल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, कि इसकी कैपिटल को दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए. In the early 1960s, the construction of the new capital began.
1960 سے پہلے the construction of the new capital began. تو اس نئی کیپٹل کی جو کنسٹرکشن تھی، جو بناوٹ تھی، وہ شروع ہو گئی. کنسٹرکشن بناؤ. The city was designed by the Greek architect Doxiadis. اس شہر کو کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ نقشہ کس نے بنایا تھا؟ ڈیزائن مین نقشہ بنانا. by the Greek architect. گریک کے ایک آرکیٹیکٹ تھے. آرکیٹیکٹ مین ماہر تعمیرات، جو یہ بلڈنگز اور یہ چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں. ڈوکسیڈیاڈس. اسلام آباد is famous for its parks, the largest of which is the فاطمہ جناح پارک. اسلام آباد جو ہے پارکس کی وجہ سے بھی مشہور ہے. مشہور. the largest of which is the فاطمہ جناح پارک، اور ان سب میں سب سے بڑا فاطمہ جناح پارک ہے. the main sightseeing attraction is Faisal Mosque, which is built in a modernistic style and considered as the biggest mosque in the world. سب سے اہم جو اٹریکشن مین کشش، سائٹ سینگ مین جو نظارہ ہوتا ہے، اس فیصل ماسک. تو کہتے کہ وہ فیصل ماسک ہے. فیصل ماسک جو ہے وہ وہاں کی ایک اہم کشش ہے. which is built in the modernistic style and considered as the biggest mosque in the world. جو کہ ایک ماڈرنسٹک سٹائل، ایک جدید سٹائل میں جو ہے بنایا گیا ہے، تعمیر کیا ہے. بلٹ مین تعمیر کرنا، ماڈرنسٹک جدید، and considered as the biggest mosque in the world. اور دنیا کا جو ہے ایک بڑا مسجد کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسلام آباد is the most modern city of Pakistan, situated at the footstep of مارگلا ہلز. اسلام آباد جو ہے پاکستان کی ایک جدید شہر ہے. situated at the footsteps of مارگلا ہلز، جو کہ مارگلا کے جو پہاڑ ہیں ان کے ساتھ ہی نیچے واقع ہے. Its well-planned roads, residential and commercial areas have green belts and shaded trees. اس کی جو ویل پلان جو پکی سڑکیں ہیں، ریزیڈینشیل رہائشی جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں، اینڈ کمرشل تجارتی ایریاز ہیو گرین بیلٹس اینڈ شیڈڈ ٹریز. کہتے کہ وہ سرسبز ہیں. اینڈ شیڈڈ ٹریز کی مین بہت زیادہ جو ہیں گھنے وہ درخت ہیں. One of the Pakistan most reputed educational institution. reputed mean مشہور. educational تعلیمی institutions ادارے. کہتے کہ پاکستان کی مشہور جو تعلیمی ادارے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی، تو اس میں قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہیں. is situated in اسلام آباد، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے. The headquarters of Pakistan Navy, Air Force and many other institutions are located here. اس کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو صدر مقام ہیں of پاکستان نیوی کے، ایئر فورس کے اور بہت دوسرے اداروں کے، تو وہ بھی وہاں پر واقع ہیں. So it's the lecture of your Pakistan topic. Now write down the meaning of difficult words. First one is located, واقع ہونا. Population, آبادی. Founder, بانی. National, قومی. Regional, علاقائی. Provinces, صوبے. Formerly, پہلے یا ماضی میں. Northern, شمالی. Political, سیاسی. Crops, فصلیں. Wheat, گندم. Rice, چاول. Cotton, کپاس. Export, برآمد کرنا. Seaport, بندرگاہ. Brave, بہادر. Agricultural, زرعی. Canal, نہر. Mosque, مسجد.
شفٹ منتقل کرنا، ڈیزائنڈ نقشہ بنانا، آرکیٹیکٹ ماہر تعمیرات، اٹریکشن کشش، بلڈ تعمیر کرنا، ماڈرنسٹک جدید، ہل پہاڑی، ویل پلانڈ اچھا نمونہ یا اچھا نقشہ، ریزیڈینشل رہائشی، کمرشل تجارتی، ریپیوٹیڈ مشہور، انسٹیٹیوشنز ادارے۔ Now look at the notes of Pakistan and its capital Islamabad. Fill in the blanks. 1 number dash is the largest river of Pakistan. Indus. Pakistan has one of the best dash system, canal system. There are dash provinces in Pakistan. 4. Azad Jammu and Kashmir is the dash area of Pakistan, northern. Islamabad is famous for its parks. Now question answers. What is geography? Geo means earth and graphy means study. Geography is the study of earth. We learned it in our previous video. Question number 2. Where is Pakistan located in Asia? Pakistan is located in the southwest of Asia. What are the neighboring countries of Pakistan? India, China, Iran and Afghanistan are neighboring countries of Pakistan. Question number 4. What is the capital of Pakistan? The capital of Pakistan is Islamabad. Question number 5. What is the currency of Pakistan? Rupee is the currency of Pakistan. Question number 6. What is the religion of Pakistan? Islam is the religion of Pakistan. Question number 7. What is the language of Pakistan? Urdu is the language of Pakistan. Question number 8. What are the important export crops of Pakistan? Wheat, rice and cotton are the main export crops of Pakistan. What is the national game of Pakistan? Hockey is the national game of Pakistan. Question number 10. Where is the second highest mountain K2 is located? The second highest mountain K2 is located in Pakistan. Question number 11. Who designed Islamabad city? A Greek architect Doxidiades designed Islamabad city. Question number 12. Where is the headquarters of Navy and Air Force located? The headquarters of Navy and Air Force located in Islamabad. Question number 13. What is the national animal of Pakistan? Markhor is the national animal of Pakistan. Question number 14. Who is the founder of Pakistan? Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. Dear students, learn this topic with spellings and also its words meaning and question answers.